Praise God. I greet you all in the matchless name of our Lord, Savior, Jesus Christ. And I hope you all are doing well. अपने कन सब बाल बरा थकिया से अपने कन के सबके प्रार्थना दे होता याद कुरिया से आज ही हम कन ही बोले जा लगा lesson number 3 first principles page number 37 हम first principle book हिके आसे इतिया इदो लगा third lesson दे इतिया हम अजी पूरी बोले जा लगा lesson तो first principles ना so Jesus commands us to make disciple ना Jesus लगा commandment तो हम 1 or 2 lesson दे हम पूरी शे की था गिशे ना मतलब to make disciples ना so first two part of these commandments to make disciples. First, Jesus' disciple must trust him. Then they must decide to baptized. Now the third thing we are going to learn, the final part of Jesus' command is to teach the disciples. Na? So this teaching the disciple, it okay, American first principles. Na? First principles, American ajihikibo. A disciple follows what Jesus taught. The early church believed that Jesus had a main set of teaching. Disciples की तो Jesus बड़ा ताइकन के हिकाइशे इतो ही ताइकन follow कुरिशे तो early church they Jesus had gave them the teaching Jesus gave them the main set of teaching. So they collected this main part of what Jesus taught and they call this collection the detach or the teaching. मतलब Jesus बड़ा early churches दे ताई लगा disciples खान के की हिकाइशे ना की नियम खान ओले भी teachings ओले भी की ताई कन के हिकाइशे इतो के collection कुरी के ना collect कुरी के ना हमिकन इतो first principle of Christ. Now, this is the first principle of Christ. So everyone need to learn these teachings. The New Testament called Jesus' main teaching the first principle of Christ. Na? Teachings के अमिकन first principle of Christ को एक ना इतो के अमिकन इतिया इतो अमिकन ही किबो. So in Colossians ये तो फर्स्ट प्रिंसिपल्स हमिकन ही की बोले हमिकन ये पैसेज दिखे ना से Colossians chapter 2 verses 6 to 8. So it is the basic passage that teach about the first principle. Those who are against Christ also have principle or ideas. Jesus' principle are against those principles. So in this Colossians chapter 2 verse 6 or 8 दे इसो बड़ा अमिकन के इतो words बड़ा ना अमिकन लगा Christian life किना का था कि बोलागे इतो लगा लिखी के ना से so you have accepted Jesus Christ as your Lord so you must continue to live with him in your life. You have put your roots deep into Christ. Build your life on Christ. Someone taught you the truth about him, so stand firm as you believe the truth. Continue to thank God for what he has done for you by Christ. Do not let any people lead you away from the truth about Christ. Do not let their philosophy controls you. Their philosophy does not contain the truth. They teach false things. They do not depend on Christ. Instead, they depend on people's traditions and the elementary principle of this world. Na ido passage de kinaka ekta Christian life na থাকিবো লাগে इतो वर्ड्स के एदे एक्सप्लेन करी के ना आसे कि अमिकन लगा अमिकन ईश्वर के एक्सेप्ट करी के ना अमिकन लगा लाइव ईश्वर लोगो दे
থাকা লাগা লাইফ থাকিব লাগে আমি কেন লাগা ফাউন্ডেশনস না ঈশ্বর উপর দে থাকা হ'ব লাগে और আমি কেন একদম ঈশ্বর লাগা কথা উপর দে আমি কেন রুটেড হই কেনা আমি কেন লাগা ক্রিশ্চিয়ান লাইফ থাকিব লাগে और कौन আমি কেন কি তো ট্ৰুথ জানি লৈছে এইটো ট্ৰুথ दे ऑपोजिट दे कि हमी के लगा लाइफ दे ना कौन लुई के ना आइले भी हमी केन तो फेथ के हमी केन गिव अप ना करिब लागे ट्रेडिशन होइले भी दुनिया लगा प्रिंसिपल्स होइले भी हमी केन के इतो हमी केन के गिराबो ईश्वर के छड़ी के ना हमी केन ना जाबो लागे ना इतो लगा वर्ड्स पैसेज थे इतो हमी केन इतिया रीड आउट करिसे सो ये तो पैसेज के ना कमेंट्री को या एक्सप्लेनेशन ना एक ता दिया लगा रीडर्स कान आसे अमिकन लास्ट चैप्टर दे भी ये तो हुई किशे ये तो जेफ रेड कुरी के ना पेज नंबर 39 ना 38 लगा स्टार्टिंग दे कि बा क्वेश्चंस कान आसे ये तो अपनी कान निजोर भावना करी के ना ये तो करिब लागे आफ्टर वी हैव लर्न दिस लेसन ना आमी केन एतो लेसन हिकी के ना आफ्टरवर्ड्स आमी केन एतो लगा क्वेश्चन अपनी खान निजोरी एतो स्टडी करिबले लगा आसे सो जेफ रेड बड़ा ये तो मैसेज ये तो Colossians chapter 2 verse 6 बरा 8 तक के ताए एक्सप्लेनेशन कुरा लगा एक तरह से कि अपोस्टल पॉल wrote letters to two young churches ना first church तो Colossia and second is Ephesus ना ये तो दो चर्चेस के अपोस्टल पॉल बड़ा ना लेटर लिखी के नाम ये तो दे वर टू यंग चर्चेस दे वर ताइकन इतने ग्रो कुरा लगा चर्च था किसे तो ताते पॉल बड़ा लेटर लिखी के ना ताइकन के ईश्वर लगा नियम तो प्रिंसिपल तो ना ताइकन के हिकाय आसे ताइकन कोई आसे ताइ अपनी लगा लाइफ तो ईश्वर के जाना पीछे देना आफ्टरवर्ड्स ना व्हेन यू रिसीव Christ in your life na after that how your life should be changed na apni laga life to kinaka change ekta thaka laga life thakibo lage और एंड ताई कोई ऐसे अपनी कन इसो लगा प्लान तो अपनी लगा लाइफ दे अपनी कन बुझिबो लागे ना यू हैव टू अंडरस्टैंड गॉड्स होल प्लान for your life na and you want to understand the importance of the church na and he wanted them to be sure what they understood about these things and more than that he wanted them to live full and useful life na isor karni ekta productive life na ekta effective life kinaka thakibo lage aur isor laga plan to apni khan laga life karni kinaka thakibo lage to sab apni understand kori ke na na apni laga life to thakibo lage koi ke na apostle paul bara young churches na Colossia or Ephesus te thaka churches khan ke tae is teaching them na you want them to understand the new life na about the new life tai can paha laga new life to ki ase to laga meaning ki ase to buji bhi koi ke na ete likhi ke na ase. So Paul was worried about the people in the churches. He cared about the way that they lived their life na Paul ekdam ido tate thaka ido believers khan karni tai beshi worry kuri kena ya tai beshi tai kan karni care kuri kena thaka एकता था कि ना अपोस्टल पॉल और ताई को हा तो अपनी लगा लाइफ तो ना बी कंटिन्यू इन ना कंटिन्यू यू मस्ट कंटिन्यू टू लिव ना ऐसो अपनी ऐसो लोगों दे अपनी लगा लाइफ तो होता ही था कि भी ना और अपनी रूटेड होई के ना ऐसो लगा कुथा बड़ा अपनी रूटेड होई के ना एक ता स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग निशना ना अपनी लगा क्रिश्चियन लाइफ ताकि भी ना टू बी स्ट्रॉन्ग एंड स्टैंड फर्म इन योर फेथ ना इनका कोई शेम because the faith in Christ gave them salvation na taiken iso logo de believe kura karni taiken salvation paishe
itu taiken ke na isor logo de isor ke kitya bhi na chhadi ke na isor logo de apni laga faith to na ekdam strong hoi ke na thakibi inaga na tai apostle paul bara itu churches ke encouraging ya ex taiken ke itu koya se. So faith affect every area in their life na, so people had to let their faith affect every area in their life. So paul wanted the people to understand this idea, so he wrote about the idea of philosophy na. So ete word se hum can dikhi पाए philosophy लगा भी है ना, वर्ड से एक तरह से ट्रेडिशन भी एक तरह से ना. तो पॉल भरा हुआ तो द वर्ल्ड्स philosophy comes from people's tradition ना, it's a basic idea come from people. So philosophy दुनिया लगा philosophy तो ना it comes from people मानो लगा tradition भरा आहा लगा philosophy ऐसे ना. So it passed to the younger people na. So every culture has tradition that affect people's thoughts and behavior today na. So सब जगह दे हमें दिखी पाए traditions और cultures ना ये तो कन transfer कुरा या ताइकन ये तो लोही के ना generation ना जा लगा ना दिखी पाए. So Christ as an entire philosophy ना which builds on a different set of principles ना. हमें क्या लगा Christ लगा philosophy की ताकि से ना it is built on a set of principles na. Talaga teaching de na base kuri ke na thaka talaga philosophy takishi. So hami can laga life ke control kuri bole takat para ekta se ना philosophy kuri के ना थका. तो philosophy अमिकन लगा whole life के control kuri के ना इतो के guide kuri के ना अमिकन लगा life दे थका लगा अमिकन दुनिया बरा पहा लगा philosophy ना हो के ना ईश्वर बरा दिया लगा philosophy ना, that is a set of principles ना teachings इतो दे अमिकन लगा life थकी बोल लागे. So next page number 40. So world has a set of elementary principle and Christ as a set of elementary principles ना. ऐसे हम इकन देखी पाइशे दुनिया दे भी एकता principle और एकता philosophy आसे और ईश्वर देवी अमिकन ना we can see elementary principle in a set of elementary principle in Christ. So in the Greek language, the phrase elementary principle actually means the first principle. Na Greek language they this elementary principle of Christ, the teaching, na it okay, na this elementary principle actually means the first principle. Ito laga meaning to Greek language they first principle ase. So we must understand the first principle completely. Na after we understand first principle, then we are able to reason na. So these principles give us guidance, it gives us a good sense na. It gives us to make wise decisions in our life na. हमें लगा life लगा choices ना. हमें decision लुआ लगा कि उले भी ना ये तो इसो लगा principles हमें ही किसे कोइले ना हमें भा decision lu bole paribo. So we will able to use a set of principles to live our life. Now we will not need a set of rules. Now rules to sab jagah se. Rules always tell us to do. Na kuri bole, but principles teach na to live, and because it brings great freedom. ना हमें के रूल्स तो होता है कुरी भी कोई के ना, बट प्रिंसिपल्स तो हमें लगा लाइफ के फ्रीडम दिया लगा एक तरह से. सो द वर्ड ट्रेडिशन मीन्स इन विच somebody has passed down na somebody has passed down the traditions na. So here we can see in Paul's Thessalonians na 2 Thessalonians chapter 2 verse 15 de na tate laga believers khan ke tai letter likha do na na we also taught tradition to you na we also taught tradition to you
na, to keep on passing na. So this tradition, ito laga tradition laga meaning ki ase apostles teaching na. It is the first principles na. Ito laga tradition apostle bara na believers khan ke na hikaishe. So they passed on this teaching to the churches with their authority. So other books or letters in the New Testament refer to tradition by other names. They refer to tradition as the teachings. So ete tradition laga meaning koishe teaching ya sound doctrines that apostle gave to the churches or the faith. Okay, so these are ito laga meaning as a tradition laga meaning. So Paul bara na apostle Paul bara churches khan ke na, he passed the tradition to the believers na. So ito laga tradition, so teaching takish sound doctrine takish or faith taki ito laga meaning to. So after the apostle died, people in the early church called apostle teaching the detached. The detached is a word in the Greek language that means the teaching na. Age de bhi hami can puri se detached laga meaning to ki thaki se teaching na. So next page hami can aibo page number 41. Ete bhi ekta author ase, teacher ase, Kevin Perota kurigena ekta teacher ase, tai laga explanation na ite words upar de ase. First to amiken Jeff Reed na tai laga commentary tai laga explanation hamiken ito bujishe. Second hamiken ito author laga Kevin Perota laga amiken explanation amiken read kuribo ite page number 41, second paragraph. People usually think that the Christian faith is a set of beliefs, but the New Testament also emphasizes teaching about the Christian's way to live. We often miss that fact. Jesus made this teaching a central part of his work. He taught his disciples principle about how God intended men and women to live. Ete amiken read kurato amiken iso laga teaching to tai laga ministry laga central part ekta thakishe na. Tai ito teaching ya ito principles tai laga disciples khan ke ya believers khan ke lebi tai hikai dia do na. Tai ki karni thakishe na tai can na ekta Christian life kinaka thakibo lage na. Tai kinaka tai can laga life de ito principles ye to teaching to kinaka tai can laga day to day laga life de tai can apply kuribo lage na to live a victorious Christian life na. Inaka kuribole na Jesus taught his disciples na. So we can see so many examples are there na. Jesus taught them this principle in the Sermon on the Mount, Matthew 5 verse 7 na. And he taught the principle at the Last Supper with them. The apostle and the early church's leader taught this principle and explained the teaching about the Christian's way to live. So they also passed this principle on to others. Na Jesus bara disciples khan ke ki hikai she to disciples bara church laga believers khan ke ito teaching to pass down kurishe. So this principle was the central part of their work na. Or Holy Spirit directed the writers of the New Testament to pass on this teaching to the churches na. Iso laga atma bara na kaun to ito authors thakishe na. Iso laga word laga atma bara taiken ke guide kori ke na ito teaching to churches khan ke pass on kuri bole na taki believers khan ekta good or right way of living na tai can laga life de thaki bole na disciples khan bara ido churches ke ido principles passed on korishe. So we thank God since sin once had control over you, but now you obey happily the teaching that you agreed to. So this verse is from Romans 6:17
Timothy 1:30 and 2 Timothy chapter 2 verse 2. So people must understand why Christ came. Na? This knowledge will affect how they live every day. Na? Jesus की कहानी आई से ये तो दुनिया दे ये तो भाल बड़ा ना ताइकन बुझी बोले ना और ये तो बुझी के ना ताइकन लगा एवरी डे ऑफ लाइफ तो ना चेंज हो बोले पारिबो. So Jesus came to this earth to so that men and women can have God's character. ईश्वर लगा character दे ताइकन ताकि बोले ना ईश्वर Jesus came so that people can be like God. Na Jesus nishna God nishna tai laga niyam can जानी के ना ताई can लगा नियम तो मानी के ना godly character दे एकता ना change हो बोले ना they must understand that Jesus said ईश्वर बड़ा हमी can करनी आयशे तो बुझिबो लागे. So New Testament teaching continue what the Old Testament taught ना. So Old Testament दे लिखा लगा prophecies kan आमी can दिखी पाए ना New Testament दे fulfill होई के ना थाका. So New Testament teaching continue what the Old Testament had taught. But the early Christian understood that the New Testament made the old teachings complete. People could now live more completely as God intended. Na Jesus showed that this was possible. Na Old Testament दे दिया लगा नियम हमें ना New Testament दे भी हमें देखी पाए ना. So ये तो हमें लगा लाइफ के ना इसो भाल पहा इसो खुशी पा लगा रास्ता दे ना ताकि बोले हमें के ये तो प्रिंसिपल्स हमें लगा लाइफ के बिल्डअप करें. So एक तक थर्ड राइटर भी ऐसे लिखी के ना से C.H. Dort ना C.H. Dort wrote the book Gospel and Law. In that book he wrote that much of the New Testament follows a pattern. First there are sections that teach about salvation, then there are sections that gives the practical result of that teaching. The letters, the group of books in the New Testament often follow this pattern. ना एते आमी कैन कैरिग्मा लगा भी आमी कैन एते लिखी की ना से ना कैरिग्मा gospel लगा about gospel and about the practical teaching na about that how we should live na. So we call those passages detached na say it detached na. The kerygma and the teaching about the faith are clearly different from the detached na. It is the first page number 42 de hami can aibo first principle of faith na. There are certain 7 first principles of faith na teachings हमें के लगा क्रिस्टियन लाइफ के चेंज करी दिया ना ट्रांसफॉर्म करी दिया लगा टीचिंग ना एक ता हमें कैन इतिया इदो पॉइंट्स बरा हमें कैन इतिया इकिबो first point. Detach tells Christian to change their behavior ना हमें कैन इसो के एक्सेप्ट करी के ना ताई लगा कमांडमेंट ओबे करी के ना बैप्टिज्म लोई के ना हमें कैन एक ता क्रिस्टियन लाइफ के ना एक ता क्रिस्टियन फैमिली दे ना एक ता क्रिस्टियन कम्युनिटी दे हमें कैन इतिया आई के ना हमें कैन लगा क्रिस्टियन लाइफ तो ना पुराना निशना ना हमें कैन ना इसो ना जानी के ना थाकी इतु निशना ना थाकी बोला गया ना. So these principles, these teaching we have to understand and we have to apply in our Christian life. Then only we can live a productive or successful या prosperous या effective ना Christian life एकता ना ताकि बोले पारे को. तो first we have to change our behavior ना. We have to change our behavior. So Ephesians chapter 4 verse 22-24 the likhi ke na se you have to take off your old nature and you have to put on your new nature. So new nature is your God's character na that should be holy and true na. So this behavior na in our life in our character hami can laga character
ना पुराना लगा नियम ना गुस्सा उठी के ना थका मिस्सा कोई के ना थका है ना सेल्फिशनेस ना हमें क्या लगा ग्रीडीनेस हमें क्या लगा ईगो हमें क्या लगा नैरो माइंडनेस हमें क्या लगा ना जेलसी ये तो सब पुराना लगा नियम तो एक ता गॉडली कैरेक्टर दे ना हमें क्या चेंज होई के ना है ना हेटनेस था किसी कोईले लव दे काइंडनेस दे कंपैशन दे मर्सी दे ना सब दे चेंज होई के ना थका एक ता न्यू बिहेवियर है ना that is God's character na that is true and holy hami can laga behavior change taki bolage this detached tells Christians this is the teaching which tells every Christians to change our behaviors. Second, the detached describes the quality of a Christian's new way of life ना हमी कन लगा Christian life एक ता quality ऐसे ना हमी कन सब जाने हमी कन लगा बच्चा खान ना हमी कन लगा बच्चा खान के ना हमी कन भाल स्कूल दे बताए ना स्पेशली कॉन्वेंट स्कूल्स खान के बेशी हमी कन हमी कन लगा भावना था के ना ताते क्वालिटी आसे एजुकेशन दे क्वालिटी आसे कोई के ना बेशी बच्चा खान के पेरेंट्स खान तो दे सेंड देम इनटू कॉन्वेंट स्कूल्स ना व्हाई बिकॉज ऑफ द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन सो इन आवर क्रिस्टियन लाइफ वी हैव ए क्वालिटी ना हमी कन लगा क्रिस्टियन लाइफ दे भी एक ता क्वालिटी आसे ना तो क्वालिटीज की आसे लव जॉय पीस पेशेंस काइंडनेस गुडनेस ना जेंटलनेस सेल्फ कंट्रोल ना Galatians chapter 5 verse 22 to 23 there. So these are all the qualities which na God's ना इसो लगा इच्छा से हमी के लगा क्रिस्टियन लाइफ दे ताकि वो लगे these are the qualities ना he is finding in our life. Third, our Christian relationship with the family ना our relationship ना our proper Christian relationship within a family ना हमी के लगा family दे ना एक ता प्रॉपर क्रिस्टियन रिलेशनशिप था कि वो लगे ना हमी के लगा फैमिली दे बाबा लगा जगह अम्मा लगा जगह बच्चा खान लगा जगह ये सो बड़ा दिया लगा कमांडमेंट्स दे ये सो बड़ा दिया लगा रिस्पॉन्सिबिलिटी दे थका लगा फैमिली लाइफ था कि वो लगे प्रॉपर क्रिस्टियन रिलेशनशिप था कि वो लगे ना अम्मा तो बाबा लगा जगह ना लुबो लागे या बाबा तो अम्मा लगा जगह ना लुबो लागे बच्चा खान पेरेंट्स लगा जगह ना लुबो लागे ना खुद दे कि ना का इसो लगा नियम बरा अमिकन के राखी के ना आसे ना our father is the head of our family ना अम्मा उता लगा submissiveness दे था कि लगा बच्चा खान ना पेरेंट्स के ओबे कुरी के ना ताइकन के रेस्पेक्ट कुरी के ना ऑनर कुरी के ना थाका लगा एक ता क्रिस्टियन प्रॉपर क्रिस्टियन फैमिली लाइफ ना नका थाकी बो लगे दिस इज द टीचिंग दिस इज द फर्स्ट प्रिंसिपल ना which Jesus had taught them to his disciple ना disciple has passed them into the churches or to the believers. So fourth point, detached explain the right relationship in a Christian church ना हमें क्या लगा churches थे हमें क्या लगा relationship ना हमें क्या लगा believers खान लोगों दे ना फाल था कि बोला गए ना हमें क्या लगा मुरम ताइकन कारनी sincere था कि बोला गए ना हुस्सा था कि बोला गए ना इन्हीं मुँह बराही मीठा मीठा ना कोई के ना भीतर दे दो ना तित्ता रखी के ना या रिवेंज रखी के ना या हेट कुरी के ना था कि बोला गए ना so our love for them should be sincere ना so work hard to give honor to one another ना एक जन के मुरम कुरी बोले एक जन के ना सबमिसिव हो बोले एक जन के मदद कुरी बोले होता है ना मुई बरा बिताई भाला से ना नका लगा भावना हो के ना humble attitude हो के ना ताकि बोला गया ना इट द राइट रिलेशनशिप हमें क्या लगा क्रिस्टियन बिलीवर्स खान लोगों दे हमें क्या लगा लाइफ ताकि बोला गया ना फिफ्थ पॉइंट detached describes the action towards neighbors
who are not Christians na amiken laga neighbors khan logo de Isur na jana Gentiles logo de amiken laga kam to na bhal example kuri kena ekta na amiken dikhabo lage that we followed Christ na taiken nishna taiken kinaka niyam dikhaya ase inaka apni laga niyam na thakibo lage na amiken laga niyam amiken laga kotha amiken laga action sab to na it should show that we followed Jesus और amiken laga Jesus bara kinaka amiken ke na humble ho bole muram kuri bole compassion kuri bole ikaish ito hi amiken laga behaviors amiken laga neighbors kan logo de thakibo lage na so always be kind na attractive ekdam muram bara taiken ke kota ko lage और taiken kinaka जवाब दिले भी आंसर दिले भी अपनी तो ना ईश्वर के मुराम रखी के ना अपनी लगा आंसर थाकी बोलागे कि अपनी ताइकन लोगों दे कोथा कोरी ले भी so 6 ना our relationship with our authority official authority लोगों दे हमी के लगा relationship ना एकदम correct थाकी बोलागे ना अमिकन ताइकन लगा rules दे ताइकन लगा ना नियम दे अमिकन obey करी के ना थाकी बोलागे ना अमिकन लगा रूलर्स के अमिकन लगा अथॉरिटीज दे ना ताइकन के क्वेश्चन कुरी बोले या ताइकन के रूल कुरी बोले अमिकन न जाई के ना इसो लगा टीचिंग तो इसो लगा प्रिंसिपल्स तो अमिकन के ना ताइकन के ओबे कुरी बोले ना अमिकन के हिकाया से बिकॉज इसो बड़ा ताइकन के ना रखा से इसो बड़ा ताइकन के दिया लगा एकता responsibility ase na eto position ase tate hamiken question kuri bole ya hamiken taiken ke na argument kuri bole na hoi ke na hamiken obey kuri ke na hamiken laga life thakibo lage na so 7 point detach ask Christians to pay attention and to be responsible na hamiken hota hai hamiken laga life na careful hoi ke na guarded hoi ke na responsible इसो बरा दिया लगा रिस्पॉन्सिबल के भाल बर हमिकन बुझी के ना हमिकन लगा काम कुरीबो लगे बिकॉज डेविल is your enemy and he walks about like a roaring lion and he looks for someone to eat ना हमिकन लगा enemy ना शैतान हमिकन के डेविल हमिकन के गिराई दी बोले की प्लान स्कीम्स ना चैलेंजेस टेम्पटेशन हमिकन के लुई के ना आई के ना हमिकन गिरी बोले ना दी बोले ना हमिकन लगा लाइफ तो always we should be careful always we should be guarded our mind and our heart and we should be responsible in everything what God has हमिकन के दिया लगा सब काम दे भाल बरा कोरी जा लगा एकता लाइफ था कि बोला गे so the teaching about how Christians should live na hamiken laga ito sab teaching this all the first principles of faith na these are all the things hamiken hikato hamiken laga Christian life na kinaka ekta thakibo lage na or kinaka hamiken laga behaviors hamiken laga life na change hoi ke na change hoi ke na thakibo lage so Christian life means that you had a new behavior okay hamiken ekta new behavior de ekta new character le godly character de change why Christian laga meaning ase na so our nature our behavior our attitude it all should show that God na that we belong to Christ ना किनका एकता फ्रूट के दिखिले हमिकन किनका जानिबो ना ये तो की लगा घास के हमिकन दिखा टाइम दे हमिकन किनका जानिबो ये तो की लगा घास आसे बाय इट्स फ्रूट ना ओनली बाय फ्रूट ना ये तो एप्पल ट्री आसे या ये तो मैंगो ट्री आसे ये तो ऑरेंज ट्री आसे किनका जानिबो ले पारिबो बाय इज फ्रूट्स ना सो ना हमिकन इसो लगा बच्चा आसे ना हमिकन ईश्वर के फॉलो कुरा आसे हमिकन ईश्वर के सर्व कुरा आसे हमिकन ईश्वर लगा नियम जाने किनका हमिकन ये तो दुनिया के दिखा बोले पारिबो ना only by our behavior only by our character ना इनका होई के ना हमिकन ईश्वर लगा बच्चा आसे कोई के ना हमिकन
na dunia logo de na in this world we can show that God, I belong to Christ. So last paragraph de aibo next page de aibo 44. Page number 44, last paragraph muite poriase. Today we cannot say that Christians from the West have distinct lives. That is because they do not follow enough of Christ's teachings. So their lives are not different. Today people who live in Western society are living Christian standards. So people should notice those who live Christian lives. But that is not what usually happens. Instead, when a society starts to live Christian standards, Christians also gradually leave their Christian standards. The society affects the way that Christians live. Na, हामी can Western na aji Western cultures, Western na tate taka Christians laga life de हामी can dekhi paile kiman isol laga niyam bara na we can see them na isol laga teaching bara kiman different way ke na taka ekta society हामी can dekhi paina tate na ki na isol bhal na paha ki happen hoi ke na thaka na हामी can dekhi pai to हामी can laga life na हामी can laga life isol laga teaching de हामी can laga life na base hoi ke na principle de thaka ekta na हामी can laga society bi thaki bo lage society na Christian standards de na thaki ke na society thaki she koile हामी can laga Christian life bi na it will affect automatically it will affect our Christian life when the society has started to live the Christian standards na so हामी can laga na हामी can laga society हामी can laga Christian life aji na it should be based upon the first principle of faith, and it is very important in our life na it should be a central part of every work na these principles na ido teachings to हामी can laga life laga na central part thakibo lage na to karni aji हामी can ete किमान आजी important एकता lesson हामी can ete हिकिशे ना I hope अपनी कन सब इतो बुझी लुइशे आजी लगा lesson और मुई अपनी कन सब के कोई ऐसे इतो chapter तो ना अपनी कन सब read out करिबो लागे ना every sentence मुई read out करिबोले ना पारिबो because of short of time होले भी अपनी कन सब इतो authors खान की explanation कोरिशे और की तो ये तो first principle लगा तो lesson दे की ये तो की ना लिखी की ना से तो सब ना ये तो books तो पढ़िबो लागे और mark कोरी के ना notes बनाई के ना ये तो फाल बरा अपनी कन की भी और I hope ये lesson अपनी कन लगा life लगा ना अपनी लगा life के भी change कोरी बोले ना aji itu lesson apni kan hikishe na aha din de na apni laga behavior apni laga quality of a Christian life apni laga relationship with your family na in the church with your neighbors na with your authority sab to iso laga niyam bara na discipline kori ke na थका लगा एकता होबोले दिबी और इतो मुई सो लोगो दे अपनी खान सब कानी प्रार्थना करिया से एंड एदे मुई लगा लेसन मुई एदे एंड करिया से गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू